Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome to EduQuestion. आज हम कवर करेंगे CS201 का असाइनमेंट नंबर 1 जो कि फॉल सेमेस्टर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो चुका है अप अनटिल नवंबर 7 2024। तो इस असाइनमेंट के लिए हमें यूज़ करना है DevC++ टूल। तो हम शुरू करेंगे इंस्टॉलमेंट से और फिर असाइनमेंट की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Alright, तो फाइनली हमारा DevC++ टूल इंस्टॉल हो चुका है एंड इट्स रेडी टू यूज़। सो लेट्स ओपन इट अप। Alright guys, so पहले ही हमें कुछ ऑप्शंस देंगे like language selection, so keep it English, and these options are related to theme. So if you want you can like modify your theme, otherwise you can go with next and then click OK. Alright, here we go. So you can see the blank screen with hidden icons. तो सबसे पहले हम अपनी source file create करेंगे. For that we have to go to file, click on new and create source file. You can do this by pressing Ctrl+N. Right. So सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं. Save as. You can just write assignment and keep it C++ source files and save it. तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है. Now let's start some coding. तो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी होगी. जैसे फर्स्ट विल इंक्लूड iostream. अच्छा गाइस, एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा. हमारी बुक में iostream.h मेंशन हुआ है इन लाइब्रेरी, लेकिन ये बेसिकली ओल्ड फैशन हो गया है. इन द न्यूअर वर्जन ऑफ C++, we just use iostream without .h. So if you use .h it will give you an error. So let's just use iostream. The second library we'll be needing is the string library. Come on. And third one we'll be using is string. Here we go. Next we'll be mentioning the namespace of std. ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके कमांड्स हम इस असाइनमेंट में यूज़ करेंगे. Okay, now we'll be declaring main function by using integer data type. Okay, so let's first check that our code is working or not. So in order to do that, let's go with the code. अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं तो you can use printf option, but in C++ you can use code option and it is related to this std library. So you can just hello world and then endl for ending the line and Ctrl S. Okay guys, जब आप अपना कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो you can click on compile and run. This will compile your code and will run it as well. So let's click. So you can see it's working. Alright, so let's remove it. Okay, so the first thing जो हमें हमारे प्रोजेक्ट में कहा गया है करने के लिए कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें सबसे पहले हम अपना नेम और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो हमारी आईडी है वो मेंशन करें. सो लेट्स डू दैट. सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारा स्टूडेंट नेम. सो डिक्लेयर स्टूडेंट्स नेम. तो गाइस, इसको हम कमेंट आउट करने के लिए डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस. सो सबसे पहले हम स्ट्रिंग यानी डाटा टाइप मेंशन कर देंगे, देन द वेरिएबल नेम स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पर हम अपना नेम मेंशन कर देंगे abc xyz. ओके, देन हर लाइन के एंड में आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे टू एंड दैट लाइन.
जैसा कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के आईडी में नंबर्स और लेटर्स दोनों शामिल होते हैं, तो हमें एक और स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट we will name it vuid. Okay, and that's going to be bc so it's going to be 9 digits after bc, so 234 20349. Okay, so end of our line. Okay, next thing we have to print them out, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में मेंशन है कि सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में हमारा स्टूडेंट नेम और vuid प्रिंट होने चाहिए. सो लेट्स यूज कोड. फर्स्ट हम कैप्शन दे देते हैं स्टूडेंट नेम का. इफ़ यू वांट, अगर आप नहीं देना चाहते तो दैट्स फाइन, आप इसे स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट हम वेरिएबल मेंशन कर देंगे विच इज़ आवर स्टूडेंट नेम. ठीक है, एंड देन we'll use endl to end our line, and similarly हम अपनी virtual id मेंशन कर देंगे vuid. स्ट्रिंग यहाँ पे भी हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे विच इज़ vuid, and then end line. Okay, so let's compile and run. Okay guys, as you can see, it is outputting our student name and virtual university id. Let's move to the next step. Store the numeric part of your virtual university id in a variable name student id. तो अब हमें जो हमारी ये id है, इसका ये जो numerical part है, ये हमें extract करना होगा in a different variable. So let's do it. Extracting numeric portion of view id. Okay, so सबसे पहले हम अपनी डेटा टाइप यूज़ करेंगे फॉर आवर न्यू वेरिएबल विच इज़ स्टूडेंट आईडी, एंड देन हम जो हमारी एग्जिस्टिंग व्यू आईडी है उसी को यूज़ करते हुए डॉट सब str का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम जब हम इस पर 2 मेंशन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी आईडी के जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे. So let's try this out and let's code it. Control S, compile and run. So as you can see, we got the numeric portion and bc has been removed. So let's continue. Alright guys, let's move on to next step. जो हमने हमारी virtual university की id का numeric portion लिया है, we have to remove the last 2 digits and the first 3 digit, and these 4 digits will be our year to consider. So in this case, the year we'll be considering is 2034. We have to get this from our numeric portion. So let's do this. Alright, so now what we have to do the same thing, string as the data type, and then we have to create a new variable with the name of year. And first we have used vuid to subtract, but now we will use a student id, the numeric portion, and then substr. Now we'll put 2 values, 3 and then 4. 3 basically हमने एक है to just delete those 3 numbers,
and then to get the next 4 numbers you have to put 4. Okay, use semicolon, and now let's code it out here. End line, compile and run. 2034, that will be our year. Okay, so just continue. So next हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा ईयर है विच इज़ 2034, ये एक लीप ईयर है या एक नॉर्मल ईयर है. लीप ईयर वो होता है जब हम फरवरी के 29 डेज कंसिडर करते हैं, एंड इफ इट्स नॉट अ लीप ईयर देन फरवरी विल हैव 28 डेज. सो लीप ईयर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है that is based on some calculation. In order to do that we have to convert our year from string to integer, क्योंकि अगर हम string यूज़ करेंगे तो हम उस पर calculation नहीं कर सकते. In order to do mathematical calculation we have to convert it to integer. So let's do that. Let's take a variable integer type and then number is the name of the variable. तो variable हमने declare कर लिया है. Now यहाँ हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रीम का फंक्शन जो कि कन्वर्ट करेगा हमारे ईयर को स्ट्रिंग से इंटीजर में. सो लेट्स डू दैट. स्ट्रिंग स्ट्रीम एंड देन वी विल पुट ss, then our variable which is year which we have to convert, and ss number. So that is how you convert string to integer. And now let's quote our integer Control S and then compile and run. So here we got 2034 again, but the difference is the first one is of string data type and this one is integer. So now let's start our calculation. Let's comment it out here from string to integer. Okay, next step हमारा होगा लीप ईयर कैलकुलेशन का. सबसे पहले हम एक बूलियन डाटा टाइप ले लेंगे और यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे इज़ लीप ईयर. मीन्स क्या ये लीप ईयर है, तो इस नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट्स. सो लीप ईयर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमारे असाइनमेंट फाइल में एक फार्मूला मेंशन है, लाइक इफ़ द ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100. ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होगी, जिसमें एक कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशंस होंगी कि एक ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल हो 4 का बट 100 का डिविजिबल ना हो, या फिर वो नंबर 400 से डिविजिबल होना चाहिए. ये हमारी सेकंड कंडीशन है. तो लेट्स ट्राई बोथ कंडीशंस. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट नंबर, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इस नंबर नाम के वेरिएबल जिसमें हमारा ईयर इंटीजर फॉर्म में उसी पे बेस्ड होगी. And then we'll use modulus sign and 4 is equals to 0. This means like अगर हम नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 होना चाहिए. If it's okay then check second condition. यहाँ हम दो कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं और हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, तो we will use and sign instead of or. तो and के लिए हम दो बार ये and sign यूज़ करते हैं. And then we'll check our second condition, number modulus 100 should not be equal to 0. So now you can see यहाँ mentioned था the year should be divisible by 4 and not divisible by 100. So we use the same statement. ये हमारी पहली condition थी जिसमें basically two conditions involved थी. Now we'll check our second condition. You can see it says or. यहाँ पे हमने एंड के लिए एंड साइन यूज़ किया था. नाउ वी हैव और के लिए हम
और साइन यूज करेंगे which is this. ठीक है, and now we will write our second condition. Number modulus 400 becomes 0. Now it says कि फर्स्ट कंडीशन मैट होनी चाहिए या फिर सेकंड कंडीशन मैट होनी चाहिए, विच इज़ लाइक नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 400. तो अगर नंबर को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए. ठीक है, now we'll use if statement. If our variable is leap year, सो जब हम जस्ट वेरिएबल मेंशन करते हैं तो इट मीन कि अगर हमारा वेरिएबल ट्रू है तो हम ये प्रिंट करना चाह रहे हैं, विच इज द ईयर. ये हमारे स्ट्रिंग आ गया. देन विल पुट विद स्पेस, विल पुट आवर वेरिएबल is a leap year. Then end line semicolon. Okay, now अगर हमारा वेरिएबल एक लीप ईयर नहीं है तो else what should we do? We should print quote the year is not a leap year. Okay, इस लीप ईयर को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर देना भूल गया था. So just put assignment operator. So let's check. Control S, compile and run. So as you can see, it's working now, and you can see it's mentioning the year 2034 is not a leap year because ये दोनों conditions को met नहीं कर रहा, तो ये एक leap year नहीं है. Just click on continue. Okay, so we have done leap year calculations. Now the next step is we've already checked leap year. Now month selection and days calculation. Take input from the user and determine the number of days. तो अब हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है विच इज़ द मंथ. सो लेट्स डू दैट. तो बेसिकली हमें यूज़र से पहले इनपुट लेना है कि वो एक नंबर ऑफ मंथ जो है वो इनपुट करे. अगर वो नंबर ऑफ मंथ 1 से 12 के बीच में है तो इट विल बी वर्किंग. अदरवाइज अगर वो 1 से 12 के बीच में नहीं है, कोई रैंडम नंबर है लाइक 22, 23, तो इट विल शो एन एरर. And it says use switch statements to determine how many days there are in that month. Like for example, अगर user 2 value put करता है तो it means he's trying to get the number of days in February. So in leap year it goes with 29 days, and if it's a non-leap year in our case it will go with 28 days. अच्छा guys, एक चीज़ मैं भूल गया था. Whenever you put integer with main function, at last you can put return 0. So it will successfully return 0 if your program runs successfully. /s taking user input for month value. यहाँ हम यूज़ करेंगे while method with true, and then first हम एक integer variable जिसकी वैल्यू हम यूज़र से लेंगे. सेकेंड हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा विच इज़ मंथ नेम, क्योंकि अगर आप अपने असाइनमेंट पे आएंगे और नीचे देखेंगे तो आपके प्रोग्राम में मेंशन है कि अगर यूज़र सेलेक्ट करता है मंथ नंबर 10 तो इट स्टेट्स मंथ नंबर 10 इज़ अक्टूबर, तो हमें मंथ नेम भी रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, सो डिक्लेयर दैट वेरिएबल. ओके, now
यूज़र से इनपुट लेने से पहले हम एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे यूज़र को, विच इज़ कोड enter the month from 1 to 12 or -1 to stop. अच्छा गाइस, -1 का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे असाइनमेंट में इंक्लूडेड है, एज यू कैन सी, और -1 टू स्टॉप। जब भी यूज़र -1 इनपुट करेगा तो ये जो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूसली रन हो रहा है ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कोड की कमांड यूज़ करते हैं, बट इफ़ इन ऑर्डर टू गेट एनी इनपुट फ्रॉम यूज़र we'll use cin and we'll use the greater than sign and then our variable name which is month. Okay, so यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, if it's working fine, compile and run. So as you can see, it's giving us question and the month 1 to 12 or -1 to stop. If I put anything, it doesn't work, क्योंकि हमने अभी तक कोई कंडीशन, कोई स्टेटमेंट ऐड ही नहीं की है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अब हमें अपनी कंडीशंस चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन जो हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि अगर यूज़र -1 एंटर करता है तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। सो लेट्स कमेंट इट आउट, यूज़र एंटर्स -1 program will be ended. जितनी भी कंडीशंस हम यूज़ करेंगे वो while स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ करेंगे, इन दोज कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक, सो लेट्स गो अहेड। हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हमारा वेरिएबल जो मंथ वेरिएबल है वो अगर इक्वल है -1 के। ओके गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ एक इज इक्वल टू लगाते हैं तो ये मंथ को -1 की वैल्यू असाइन कर देता है। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि मंथ -1 के बराबर है, सो वी हैव टू यूज़ इज इक्वल टू साइन ट्वाइस। ओके, एंड देन लेट्स राइट डाउन आवर कंडीशंस। अगर यूज़र ने -1 इनपुट किया है मंथ की वैल्यू में, सो वी विल कोड program ended and will end line. Okay, let's check, compile and run. Okay, so if we wrote -1, it says program ended, but it's not ending the program, क्योंकि हमने यहाँ प्रोग्राम को एंड करने के लिए एक कमांड यूज़ करनी होती है which is break. अब हम दोबारा अपना प्रोग्राम रन करते हैं। Now let's put -1 and you can see that it's ended our program. It's not asking for any more input. Okay, so let's continue. Okay guys, अब हम create करेंगे next condition and that will be if month is less than 1 or month is greater than 12. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र मंथ की वैल्यू 1 से कम रखता है, जैसे कि 0, -2, -3, -4, ठीक है, तो एक एरर शो होगा। और अगर ये वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी तो भी एक एरर शो होगा, लाइक इफ़ इट्स 13, 14, 15। सो ऑब्वियसली मंथ से 1 to 12 होते हैं, तो कोई भी और डिजिट अगर यूज़र इनपुट करेगा इंस्टेड ऑफ -1, तो -1 पे प्रोग्राम एंड होगा। तो -1 से हट के जो भी नंबर पुट होगा जो 1 से 12 के बीच में नहीं होगा, तो उस पर एक एरर शो करना है हमें। सो लेट्स डू दैट। कोड invalid month ओके,
एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर यूज़र इनवैलिड इनपुट देता है तो बेसिकली हम उसे एक और मौका देंगे कि वो एक वैलिड इनपुट प्रोवाइड करे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रेक कंडीशन, क्योंकि ब्रेक से हमारा ऑपरेशन टर्मिनेट हो रहा था, एंड हो रहा था, वी विल यूज़ कंटिन्यू एंड लेट्स गो। तो कंपाइल करते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू यूज़ 13 इट सेज इनवैलिड मंथ, if you use 0 it says invalid month, if you use 15 it says invalid month. ठीक है, so let's close it. Now the third condition which will be a true condition, कि अगर यूज़र 1 से 12 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्विच केस। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास 12 मंथ्स हैं तो उसके डिफरेंट डेज होंगे और डिफरेंट नेम होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं विच इज़ डेज। डाटा टाइप विल बी इंटीजर। ठीक है, और एज यू कैन सी ये सब हम वाइल के लूप में करेंगे। ठीक है, तो स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने स्विच लिखना है, देन स्विच हमने करना है मंथ की बेसिस पे, मंथ की वैल्यू की बेस पे। ठीक है, यूज़ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपने केसेस मेंशन करेंगे। सो केस 1 हमारे पास होगा जब यूज़र वैल्यू 1 पुट करेगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास डेज़ जो है वो होंगे, जो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी का उसमें 31 डेज़ होते हैं, सो पुट 31। और मंथ नेम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था ऊपर, एज यू कैन सी अबव। ठीक है, तो मंथ नेम यहाँ पे आ जाएगा जनवरी। ठीक है, ओके गाइस, वन मोर थिंग, स्विच केस में हमें हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट देना होता है कि अगर वैल्यू करेक्ट है, यूज़र का इनपुट 1 है, देन वी विल प्रिंट दीज टू वैल्यूज़ एंड विल ब्रेक द प्रोसेस। ठीक है, अदरवाइज ये दूसरी वैल्यूज़ को भी प्रिंट करना शुरू कर देगा। ओके, सो लेट्स क्रिएट केस 2। और केस 2 गाइस हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है फरवरी मंथ। सो इसमें जो डेज़ हैं वो, एज यू नो दैट इन लीप ईयर in February we get 29 days, but if it's not a leap year then we get 28 days. so यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, which is going to be like this। सबसे पहले हम डेज के ऊपर एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर लीप ईयर, जो हमारा इस लीप ईयर का वेरिएबल था यहाँ पे, अगर वो लीप ईयर की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो 29 जो है वो आंसर होगा। इफ इट्स इनकरेक्ट देन 28 आंसर होगा। नाउ द सेम वे विल पुट month, so month name is equal to February। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो गाइस ये हमारे सारे मंथ्स के केसेस ऐड हो चुके हैं। केस 1 में आप देख सकते हैं 31 डेज होते हैं और मंथ नेम जनवरी होता है। देन वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट। केस 2 में हमारे पास लीप ईयर के बेसिस पे 29 डेज होंगे, अगर वो यस है, अगर वो नो है तो 28 डेज होंगे, एंड द मंथ नेम इज़ फैब। केस 3 विच इज़ मार्च, 31 डेज होते हैं मार्च में। केस 4 अप्रैल विच इज़ ऑफ 30 डेज। तो इस तरीके से हमने अपने सारे केसेस बना लिए। ठीक है, एंड आफ्टर ईच केस वी यूज़ ब्रेक, कि अगर इनमें से कोई भी केस यूज़र के इनपुट के हिसाब से करेक्ट होता है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और ऑपरेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओके, आफ्टर ऑल दीज केसेस अब हमें यहाँ रिज़ल्ट कोड करना है बेसिकली। ठीक है, कोड मंथ। अच्छा, ये जो कोड करेंगे हम वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में करेंगे जैसे हमारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। एज यू कैन सी मंथ 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मंथ की स्ट्रिंग कोड कर दी। ठीक है, देन वी यूज़ यूज़र इनपुट वैल्यू। ठीक है, जो कि मंथ में है, मंथ वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट हम
एक हाइफन को स्पेस के साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मंथ नेम, ठीक है। नेक्स्ट हमें यूज़ करना है हैज़, ठीक है। नेक्स्ट हम डेज का वेरिएबल कोड करेंगे, ठीक है, एंड देन यूज डेज, ठीक है। एंड लाइन, लेट्स सी। सबसे पहले मंथ एंड देन मंथ नंबर एंड देन हाइफन मंथ नेम हैज़ this much days. Okay, so let's compile. So let's check with 1. Okay, so it says month 1 January has 31 days. Great. Month 2 February has 28 days because 2034 is not a leap year. Let's try 3. March has 31 days. 4. April has 30 days. 5. May has 31 days. 6. June has 30 days. 7. July has 31 days. 8. August has 31 days. 9. September has 30 days. 10. October has 31 days. 11. November has 30 days. And 12. December has 31 days. And if you put 0, it says invalid month. If you use -1, it says program ended. So I guess हमारा assignment complete हो चुका है. Let me check कि अगर कोई condition रह गई है. First the student name, then the virtual ID number, then it says okay, one more thing. ठीक है guys, ये कुछ extra codes किए थे हमने just to check our program. ठीक है, तो पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं. हमारे पास ये जो न्यूमेरिक पोर्शन आ रहा है ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम में कोड करने का नहीं कहा गया, तो हम इसे रिमूव कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स रिमूव दैट न्यूमेरिक पोर्शन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईयर मेंशन हुआ है स्ट्रिंग फॉर्म में और इंटीजर फॉर्म में, तो हम इसे भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, ओके, द ओनली थिंग वी नीड इज this thing. The year 2034 is not a leap year. Okay, so let's save. Alright, so let's do a final test. Okay, so first we mention student name, student ID. Okay, next 2034, which we got by skipping the last 2 numbers and then the first 5 digits. Okay, next it says it's not a leap year, like this example. Now if we add 44 like this example, it says invalid month. If we put 1, it says January has 31 days and month 1. Okay, similarly if you put 2, gives the same answer. Put 3, gives the same answer. If you put 88, gives the same answer. If you put 10, giving the same answer. Month 10, October has 31 days. And lastly, if you put -1, it ends our program. Okay guys, that's all. If you have any questions, please let us know in comment section. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.